Okay, so we were done with the first 7 questions on this in the earlier class. So let's start with this. So we've got the circle, and there is some complex figure that is, inside that. We've got a lot of lines and another circle inside that. So let's see what we're being asked about. So we have two circles. Dono ka center O hai. Okay, so that's the first point that is important. Then ABCD endpoints of the circle. So there are circle आपको नजर आ रहे हैं वहाँ पे. EFG small circle पे हैं. We have some tangents there. CGD, CGD, and CFB. So these are tangents. They are straight lines, right? And the other lines AEOC, AEOC, and FG, FG. They intersect at X at 90 degrees. Okay, so that's an important thing. यहाँ पे जो angle है, that is 90 degrees. X के ऊपर they're intersecting at 90 degrees here. Okay, so this is the information that we have. And the angle GOX, that's also given to be Y here. Okay, find each of these angles as simple as possible in terms of Y. Give reasons for your answers. Okay, so we have to find all of these angles. जिसके नीचे हमारे पास सारे होंगे, and we also have to give the reasons for the answers that we give. Okay, so GEO. GEO. Let's look at that. GEO कौन सा angle है? That's this angle here. ठीक है? ये वाला angle हमें figure out करना है. Now, what is this angle going to be? Any idea? So let's think about this. We have this whole chord. अगर ये angle y है, so सबसे पहले इस triangle को सोचें. This triangle OGF. This is an isosceles triangle. Why? Because this is radius, and this is also radius. ये दोनों radius हैं, है ना? अब क्योंकि ये दोनों radius हैं, हमें पता है कि जो ये वाले नीचे वाले angles होंगे, ये angles equal होंगे. अगर ये angles equal हैं, that also implies that these angles are equal. ये वाला angle और ये वाला angle. If that angle is y, this is also going to be y. ठीक है? ये दोनों angles y हो जाएंगे. अब आप क्या कर सकते हो? You can use that property. Angle at center is twice the angle at the circumference. ठीक है? So, आप क्या करोगे? आपको पता है कि ये जो line है GF, ये जो chord है, this chord GF, this chord GF is making this angle at the center. Center पे क्या angle बन रहा है? The center पे angle बन रहा है 2y पूरा. अगर ये पूरा angle देखें, this is 2y angle, right? Y ये है और y ये है. The total angle is 2y. ऊपर वाला angle क्या होएगा? उसका half हो जाएगा. This whole angle is going to be half of that. So this angle is going to be y. अगर ये नीचे वाला 2y है, तो ऊपर वाला पूरा angle कितना होना चाहिए? y होना चाहिए, because it's going to be half of that. Center पे angle double होता है as compared to angle in the circumference. यानी अंदर वाले circle को देख रहे हैं आप. इस circle के अंदर we had this chord GF. GF chord एक angle बना रही है center के ऊपर और ये एक angle बना रही है circumference के ऊपर. So angle at the circumference is half of the angle at the center. अगर नीचे वाला 2y था तो ये y हो जाएगा. And then again we use this isosceles triangle वाली property. We have these two angles equal. Okay. So I think we can actually make it even simpler than that. So I went through a longer route there, but let's make it a bit simpler. We can do it directly as well. So rather than using isosceles triangles, let's use these points. इनको ये वाले points use कर लेते हैं. This point is G, and this point is let's call this some other point. Let's call this Z. That's not used anywhere else. अगर हम इन दोनों points को use करें ना तो हमें isosceles triangle भी use नहीं करनी पड़ेगी. We can do it directly. We can say let's use this arc here. GZ arc use कर लेते हैं. ठीक है? Let's use this arc. GZ arc. ये arc अगर use कर लें उससे direct हो जाएगा. We don't have to go through that longer method. So we know that GZ arc is making an angle at the circumference at the center. That is y. ये angle y है. यही arc आपका circumference पे क्या angle बनाएगी? See this line here. ये arc एक angle बना रही है circumference के ऊपर और यही arc एक angle बना रही है center के ऊपर. तो center पे जो angle होगा वो double होएगा और जो circumference पे angle होगा वो half होएगा. So that angle is directly coming out to be y/2 from there. ठीक है? उससे भी y/2 आ जाना था जो हम पहले कर रहे थे.
but that's a longer route for finding the same thing. अगर ये y है, आप इस arc को अगर use कर लो, GZ arc को, तो that was directly आ गया. That is going to be y over 2. So what do we say here? This is y over 2. Y, you can give the reason. हम कौन सी वाली property use कर रहे हैं? Angle at the center is twice the angle at the circumference. ठीक है, इसको आप अपने वर्ड्स में लिख लें बेशक. अगर आपको वो प्रॉपर तरीका याद है उसको लिखने का एब्रिविएशन के अंदर, दैट इज आल्सो फाइन. तो अगर आपने उस तरह से किया और एंगल, that might just take a few less seconds, but that's okay as well. Angle at center is equal to 2 times the angle at circumference. Right, इस तरह भी लिख सकते हो. आपने बस एग्जामिनर को बताना है that you understand which property you're using. अपने words में लिखना है, just make that clear. ठीक है, so that's what we are using here. Okay, now let me have a look at the chart. OE and OG are equal. OE and OG. OE and OG. Yes, they're equal. So, but how do we use that? If yes, they're equal, so this is radius. So we know that this is the radius and this is the radius. Oh, sorry, this is the radius. What that means is the upper wala angle, ye wala angle, this is going to be equal to this angle here. Niche wala angle ke equal. But how do you find this angle now? We have to figure out how we can find this angle. So is there a way to find this angle? We will have to think about that. So niche wala angle kaise nikalenge? Let's call this x. Ye x kaise nikale? 180 minus y. But why would it be 180 minus y? So we know that this is 90. Ye 90 hai. So ये नीचे वाला angle होएगा, this we can find, this is going to be 90 minus y, but we can't really find this angle. अच्छा ठीक है, so I get your point. So that's what you were saying. और दूसरी side पे कह रहे हो. Okay, so yes, that's another way to do it. Exactly, that's correct. So one idea could be, you say this is y. If this is y, this remaining angle here is 180 minus y. This angle is 180 minus y. And once you know this is 180 minus y, this is the radius and this is the radius. बाकी angle कितना बचा आपके पास अब? अगर ये 180 minus y हो गया, what are you left with? बाकी दोनों angles कितने होने चाहिए total? 180 में से minus कर दे 180 minus y को. क्या बाकी दोनों angles का sum ये होना चाहिए. So if you do that, you get 180 minus 180 plus y, and you get y from there. यानी कि ये तो बाकी दोनों एंगल्स बचे हैं हमारे पास, इन दोनों का सम क्या है? That is y. अब क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, we do y over 2 from there. ठीक है, इसके लिए आप वर्किंग शो करोगे, you can write this directly. उसका डायरेक्ट तरीका होता है कि आपने 180 में से माइनस करना है जो आपका ये एंगल है, एक एंगल जो आपको पता है 180 minus y, and you divide that by 2. ठीक है, and the reason would be, पहले दो रीजन है इसके अंदर. एक तो आप एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, angle on a straight line. That's the first thing that you're using. Angle on a straight line. That's the first property you're using. इसके लिए 180 minus y के लिए, and then the second thing you're using is isosceles triangles. Right, so you can also do it that way. Yes, that's slightly longer, but yes, you can do that. Is that okay? Yes, sir. Clear. Okay, good. Now let's move on to the next one. अच्छा, point 2 में वो क्या कहता है? GCX. Find GCX. GCX. Where is C? C point कहाँ गया? That's right here. GCX. ये angle find करना है. Okay. Now let me erase the previous working from there. Okay, GCX, we need this angle here. ठीक है, अब ये कैसे figure out करें? Now remember, we already have this angle here. This is y over 2. We know this angle. Now we need to find this angle here.
अच्छा हमें एंगल ये बताए y। अब देखते हैं अच्छा इसमें हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम यूज करते हैं। कौन से वाले सर्कल के ऊपर है? दिस इज ऑन द आउटर सर्कल। आउटर सर्कल के ऊपर सर्कमफेरेंस पे एक एंगल आ रहा है। आउटर सर्कल के ऊपर सर्कमफेरेंस पे एक एंगल आ रहा है। अब इसके दो तरीके होते हैं जनरली हम सोचते हैं, या तो एक तो आपको देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी नजर आ रहा है बाहर, बट बाकी एंगल्स नहीं पता हमें उसके ऊपर, तो वो तो हम नहीं यूज कर सकते। व्हाट एल्स कैन वी यूज? we can possibly say कि ये एंगल किन कॉर्ड से बन रहा है, किस कॉर्ड से बन रहा है ये एंगल किस कॉर्ड या किस आर्क से बन रहा है। अगर बड़े वाले सर्कल में देखें, इट्स कमिंग फ्रॉम दिस कॉर्ड एडी कॉर्ड से बन रहा है ना। एसीडी एंगल है ना, ये सी वाला एंगल, ये ऊपर वाली उस कॉर्ड से बन रहा है आउटर सर्कल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इस आर्क से बन रहा है। ठीक है, अब वो आर्क एक एंगल बना रही है सर्कमफेरेंस के ऊपर। Do we have any related angle here? Do we have any related angle here? So कोई ये आर्क या ये कॉर्ड कहीं और पे भी कोई एंगल बना रही है, और तो कोई सर्कमफेरेंस पे एंगल नहीं बन रहा। क्या ये आर्क सेंटर पे बना रही है एंगल? कोई सेंटर पे भी एज सच नहीं बना रही, वो भी हमें नजर नहीं आ रहा। तो हम कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी भी इट अपीयर्स नहीं यूज कर सकते। सो व्हाट एल्स कैन वी यूज? अब इस ट्रायंगल के अंदर और देखते हैं, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। इफ दिस इज C, if this is C, can we find any other angles here? अच्छा, एक तो diameter है, this is the diameter, we know that this is the diameter, so diameter से हमारे पास क्या आ जाएगा? We can say this angle is 90, this angle should be 90। अगर ये एंगल 90 है तो हमें किसी तरह से ये ऊपर वाला एंगल अगर मिल जाए, ये वाला एंगल, अगर हमें वो वाला एंगल किसी तरह से मिल जाए तो we can possibly find this। लेकिन वो ऊपर वाला एंगल निकालना भी it might take a while। अच्छा, नीचे वाले ट्रायंगल यूज करके देखते हैं। This is also 90, this is also 90, so maybe if you can find this angle somehow, can you find this angle somehow? Yes, so that's actually the easier one। ये हम करते हैं because इसमें बहुत ज्यादा। Yes, सर डीजीसी एक टेंजेंट है, ठीक है, तो yes, रेडियस ओजी रेडियस तो वो 90 डिग्री बनेगा, तो हम 180 माइनस 90 माइनस वाई से आ जाएगा वो 90 माइनस। exactly, so that's what we're using। so हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, अंदर वाली ट्रायंगल, इसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा था, राइट। दिस एंगल इज 90, बाकी एंगल कितना 90 बचा, 90 में से y भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट किया, y सब्ट्रैक्ट किया, और ये लेफ्ट विद हियर, ये आपका एंगल बन गया 90 माइनस y। अगर ये एंगल आ गया आपके पास, तो ये बाहर वाला एंगल कितना होएगा? ये कितना होना चाहिए? ये क्योंकि पूरा पूरा 90 है ना, इट्स अ टेंजेंट। यू हैव OG एंड GC, दे आर रेडियस एंड टेंजेंट, ये पूरा एंगल 90 है। तो अगर ये 90 माइनस y है, नीचे वाला एंगल कितना होएगा? लेट्स फाइंड दैट आउट। 90 में से 90 माइनस y अगर सब्ट्रैक्ट करें, क्या आता है? इट विल बी y। दिस एंगल इज गोइंग टू बी y हियर। अगर ये एंगल y हो गया है, ये 90 है, उससे हमारे पास क्या होगा? ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस y। डज दैट रीजनिंग मेक सेंस? तो अगर हम छोटे वाले सर्किल में देख रहे हैं, रेडियस एंड टेंजेंट दे हैव एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। हमने ऊपर वाला एंगल फाइंड कर लिया, दिस इज 90 माइनस y। वो 90 माइनस y है, नीचे वाला y होना चाहिए, और अगर ये y है और ये 90 है, तो ये एंगल क्या बन जाएगा? दिस विल बी 90 माइनस y। ओके, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी विल राइट दैट द एंगल GCX इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस y। And why is that? What is the reason for that? इसमें क्या क्या हम property use कर रहे हैं? We are using sum of angles in a triangle, right? एक वो use कर रहे हैं, और radius और tangent की perpendicular होना use कर रहे हैं। So एक तो हम कहते हैं radius is perpendicular to the tangent। ये perpendicular का sign होता है, you can use that, or you can just write in words, radius is perpendicular to the tangent। That's one thing that we're doing। And the other thing that we're doing is the sum of, so let's call this number one. The second thing that we're using is sum of angles in a triangle is equal to 100 and 180, is equal to 180 degrees।
ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाट वी राइट देयर। अच्छा, एंगल DAB, लेट्स थिंक अबाउट दैट नाउ, वेयर इज दैट एंगल? एंगल DAB, that's right there at the top, DAB, so erase that, हमें ये एंगल चाहिए पूरा, ठीक है। Now let's think about this. How can we figure this angle out? अच्छा, अब देखें, आपको बाहर एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है ABCD, इसके चारों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो चारों वर्टिसेस हैं, they are lying on the circle, सर्कल के ऊपर सारे लाई करते हैं, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो यहाँ पे बन रहा है, राइट? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो यहाँ पे बन रहा है। Can we use that cyclic quadrilateral? We can perhaps say, let's figure out this angle here. अगर ये एंगल 90 माइनस y है, ये वाला एंगल कितना होगा बाकी? अगर हम पूरा एंगल निकालना चाहते हैं तो ये बाकी एंगल कितना है? अगर ये y था, अगर ये y था तो ये भी y है, हमने पहले डिस्कस किया था, ये दोनों रेडियस हैं, ये दोनों, ये भी y होगा। अगर वो y हुआ, वही वाली सारी रीजनिंग जो हमने लेफ्ट साइड पे यहाँ पे यूज की है, वही रीजनिंग राइट साइड पे यूज कर सकते हैं, बिकॉज़ दे आर एग्जैक्टली द सेम ट्रायंगल्स, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं एक तरह से। ये y है, ये 90 माइनस y होगा, ठीक है, उससे हमारे पास ये y आ जाएगा, और ये नीचे वाला एंगल वो भी हमारे पास क्या आएगा, 90 माइनस y आ जाएगा। सो वी हैव दीज टू एंगल्स, वी नो दैट दिस इज आल्सो 90 माइनस y, ओके। इससे हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये पूरा एंगल आ गया एक, तो दैट्स द एंगल DCB। लेट्स राइट दैट एंगल डाउन, यहाँ पे लिख लेते हैं, the angle DCB is equal to 2 times 90 minus y, which is 180 minus 2y, ठीक है। ये 90 minus y था, ये 90 minus y था, टोटल एंगल कितना हो गया ये? That's going to be 180 minus 2y। अगर ये 180 minus 2y है, what about the angle that's opposite to this in this cyclic quadrilateral? Cyclic quadrilateral में ना ये सारी coordinates, 4 coordinates हैं, और 4 के 4 coordinates सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, आउटर सर्कल के ऊपर। So जो opposite angle है उसके, जो हमें फिगर आउट करना था, वो क्या होना चाहिए? So 180 minus 2y. Yes, 180 में से ये पूरा एंगल सब्ट्रैक्ट कर देना है। So we say the angle DAB is equal to 180 minus 180 minus 2y. And that gives us 2y. So ये एंगल हमारे पास आ गया 2y. So ये 2y आ रहा है. Is there another? Yeah. So there could have been another possibility, but that's a bit harder to understand. अगर मैं आपको ये बताऊं, this angle here. Yeah, so that could have been used as well. लेकिन वो थोड़ा सा complex हो जाएगा। खैर, ये 2y आ गया हमारा। So the angle DAB is equal to 2y, and what is the reason for that? The reason is we are using two things here. एक तो हमने वो यूज कर लिया, तो मेन प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, that is the cyclic quadrilateral one. So we say this is because angle, एक या तो आप अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स का पता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 है, या फिर आप ये कह सकते हो ऑपोजिट एंगल्स in a cyclic quadrilateral opposite angles in a cyclic quadrilateral sum up to 180 degrees, ठीक है, या फिर sum of opposite angles in a cyclic quadrilateral is equal to 180. अपने words में आप किस तरह से लिखते हैं, just make sure the examiner understands which property you're using there. Okay, so हमारे पास क्या आ जाएगा, it's going to be 2y here. Okay, let's look at the next part. Complete the sentence. Triangle EGC is congruent to triangle. Okay, we don't know which that triangle is. EGC. EGC. That's this triangle here. E, G, and C. So this triangle. ये अपना EFC के इक्वल हो सकता है। EFC. The only triangle that EFC, you yes, see here, मुझे सारा कुछ
that it may be congruent to this triangle, right? आपको कोई reasoning उसने नहीं पूछी, but that's fairly obvious from there. उसने reasoning पूछी होती तो आपको बताते सारी reasons के angles के कौन कौन सी, एक तो common side है दरम्यान में आपके पास, ठीक है, ये दोनों sides equal हो जाएंगी because of this isosceles triangle, दरम्यान में 90 बन रहा था midpoint के ऊपर, और इसी तरह से नीचे वाली साइड आउट tangents आ रहे हैं हम सिंगल पॉइंट, तो वो भी इक्वल होते हैं. You can prove that as well. लेकिन सिर्फ आपसे पूछा है कौन सी ट्रायंगल है, just have to write that. That's this triangle EFC. So that's the triangle EFC. This is the triangle that's congruent to that. अच्छा, then it says prove that. अब जब उसने कहा prove, तो उसका मतलब you have to give the reasons. So prove that the triangle ADC is similar to triangle OGC. Okay, ADC and OGC, we have to prove that they are similar. Similar triangles में क्या करना होता है? Prove that two angles are equal. पर तीसरा अब वैसे भी equal हो जाएगा automatically because sum of angles is going to be constant. So at least दो angles आपने equal prove करने हैं इसी तरह से. ठीक है? अच्छा, so let's do that. ADC and OGC. ADC and OGC. Let's figure that out. ADC, so that's this triangle here. ये बाहर वाली triangle है, एक ये triangle है. OGC, that's this triangle GC. Okay, ये triangle को आपने equal prove करना, similar prove करना. Okay, अच्छा, एक तो हमारे पास आ गया कि this angle here is 90. This angle is 90 and that angle is also 90. ये दोनों 90 है ना? Why? So let's write that first. ADC, so triangle ADC, angle ADC is equal to the angle OGC and they're both equal to 90 degrees. Why? इसमें दो चीजें यूज हो रही हैं, अब दोनों यहाँ पे लिख देंगे. एक तो हम ये ADC के लिए क्या कर रहे हैं, angle made by the diameter on the circumference, that's why it's 90. AC आपका diameter है, AC diameter है, diameter circumference angle बना रहा है, that is 90. So ADC कहाँ से आ रहा है? This is the angle made by diameter. और OGC कहाँ से आ रहा है? tangent radius और tangent. ठीक है, हमारा आ रहा है angle made by diameter. जो OGC था, that was the radius and tangent, so we can just write radius is perpendicular to the tangent. ठीक है, that side पे भी दोनों reasons अलग-अलग लिख सकते हो, ये दो properties हम use कर रहे हैं वहाँ. अच्छा, now let's figure out another angle. ये y था, अगर ये y था तो हमारे पास ये एंगल भी हमारे पास y होना चाहिए. How do we prove this? How can we prove this? DAB 2y है ना, तो DAC y होगा खाली. Exactly, तो ये हमने पहले किया है शायद किसी पॉइंट के अंदर. DAB, सर वो DAB आया. DAB, अच्छा DAB हमने निकाला था पहले, और क्या निकाला था यहाँ पे? GEO निकाला था, that was out. अच्छा ठीक है, DAB हमने किया था पहले यूज, तो हमने ये तो इसकी तो रीजनिंग दी हुई है पहले, तो we can use that. DAB was 2y, so we can say the angle BAC, is equal to 2y divided by 2. That gives you y. Why is that? Because ये हमारे पास isosceles triangle बन रही है. इसके रीजन हम कहाँ से देंगे? Yes, this नीचे वाली ट्रायंगल से, लेकिन इसकी प्रॉपर रीजनिंग हमें देनी पड़ेगी ना. So why are we using this? Why are we saying this is y over 2? Why would this be y over 2? What reason do we have for this? नीचे तो रीजन बन रही थी हमारे पास, यहाँ पे we don't have a proper proof for that. फिर alternate triangle नहीं बन रहा.
EACG तो सर GCX हमने y है रीजन तो सर एक रीजन थी कि डायमीटर के साथ बनाना और दूसरी के इसके साथ परपेंडिकुलर। सर अब दोबारा क्यों दे रहे हैं? Okay, yeah. So we can basically use this that DAC and BAC they are equal. Why would they be? लेकिन वो भी हमें प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा पहले क्या लिखा है पिछले पार्ट के अंदर? अच्छा वो नहीं हमने लिखा congruent. So yes, they are congruent, Manahil, that's correct. But again, but whatever reason we give, we should be able to prove that as well. We should be able to give reason for that, a proper reason for that. अच्छा, so इसमें हमने OCG निकाला था ना पहले, OCG, C के ऊपर एंगल हमने ये फिगर आउट किया था. Yes, so that is going to be the reason for this. y/2 की बजाय हमें रीजन यहाँ पे क्या देनी चाहिए? 2/2 की बजाय, क्योंकि उसके हमारे पास कोई सॉलिड रीजनिंग नहीं है, हम सिर्फ देख के अंदाजा लगा रहे हैं. अच्छा, दिस इज व्हाई इट शुड बी. ठीक है, यहाँ पे हम क्या सकते हैं? वी हैव दिस एंगल. ये पहले से एंगल मैंने इरेज कर दिए थे, इरेज ना किए होते हैं नजर आ जाता है वहां पे. हमने GCX एंगल निकाला था ना, दिस वाज 90 - y. This angle was 90 - y. So since this angle is 90 - y, इस पूरी ट्रायंगल में आपको नजर आ रहा है ये एंगल रह गया सिर्फ ADC के अंदर. So you can say DAC angle. The angle DAC is going to be 180 minus 90 minus 90 minus y, which gives you y. That is proper reason. ठीक है, ये ट्रायंगल यूज कर रहे हैं ADC, इसके अंदर ये एंगल गिवन है, ये एंगल 90 है, तो थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं, that turns out to be y. Okay, अगर ये y है तो that is also equal to this angle here, that's GOC. कहाँ पे एंगल बन रहा है वो? GOC. So we have these angles equal, so they're also equal to angle GOC. ठीक है, ये दूसरा एंगल हमारे पास इक्वल हो गया. दो एंगल्स इक्वल हो गए, अब तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, because जब दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तीसरा has to be equal. But if we can see if you can find a very easy reason for that, अगर मिल जाती है, this is 90 minus y, तो वो तो कॉमन एंगल बन रहा है. ये एंगल वैसे ही कॉमन है, हम ये भी यूज कर सकते थे पहले, ये हम पहले लिख लेते, तो थर्ड एंगल हम कहते हैं वो तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा. So OCG, the angle OCG is equal to the angle ACD. ये देखें, ACD भी वही एंगल है और GCO भी वही एंगल है. They're both 90 minus y. They're both equal to each other. Why? We say they are common angles. Right? Now, since all three angles are equal, they are similar triangles. Similar triangles में क्या करना होता है? Angles को equal prove करना होता है. You can do any two angles. You can prove any two angles equal. फिर थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है. आप थर्ड पे आप ये कह सकते हो कि since the sum of angles is 180, so the third angle should also be equal. कोई भी दो एंगल्स आप इक्वल प्रूव कर दें, थर्ड के लिए आप वो रीजन लगा सकते हो अगर आपको कोई और रीजन नहीं मिलती तो. Is that okay? Is this okay? अच्छा, फिर वो कहते हैं what type of quadrilateral is AOGD? अच्छा AOGD. Where's D? AOGD. अच्छा ठीक है. So this angle. trapezium. So let's mark there AOGD. We're talking about this quadrilateral here, AOGD. ठीक है, इसकी बात हो रही है. अब ये what type of ट्रेपेजियम लगा है. Yes, it is a trapezium. Why? Because we know that these lines are parallel. ये line और ये line they are parallel. ये भी 90 बन रहा है, देखें यहाँ पे उसी सेम स्ट्रेट लाइन से आते हुए BC लाइन के ऊपर. ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है. So these two lines are parallel to each other. बाकी दोनों parallel नहीं है, so this shape is going to be a trapezium for that reason. Right? तो इनके दोनों 90 पे बन रहे हैं, पैरेलल लाइंस हैं. हम यहाँ पे कहेंगे दो ऑपोजिट साइड्स अब पैरेलल होती हैं, बाकी दोनों पैरेलल नहीं है. So this is supposed to be a trapezium. दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल थी.
अच्छा, then it says find the area of triangle OGC. OGC का एरिया फिगर आउट करना है, नहीं सॉरी, उसका रेशियो फिगर आउट करनी है विद एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. OGC की रेशियो विद ADC, OGC and ADC. अच्छा, OGC and ADC. अच्छा, we already proved that they are similar triangles. ठीक है, अब देखें यहाँ पे लेंस तो कोई भी नहीं दी हुई है हमें, right? We don't have any lengths given as such. तो हमें किसी तरह से फिगर आउट करना है कि इनमें एंगल्स को यूज करके कैन वी फिगर आउट एनी रेशियो देयर, OGC एंड ADC की रेशियो. सो लेट मी यूज दैट हियर. करते हैं. Now we have less clutter. Okay, so we have the important angles mentioned there. Now let's figure out हम रेशियो किस तरह से निकाल सकते हैं. ठीक है, अब देखें आपको चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कोई भी. ठीक है, तो अब ये एक साइड देखें, ये वाली साइड OC, दिस इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल OC. अगर इसको हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, दिस वाज R, लेट्स से रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, तो जो पूरी लेंथ है AC, दिस होल लेंथ, ये कितनी होगी? अगर नीचे वाली R है तो ऊपर वाली कितनी होगी? दैट्स गोइंग टू बी 2 times R. R होगी, हाँ 2 times R. डायमीटर है, तो लेंथ की रेशियो हमारे पास क्या आ रही है? लेंथ की रेशियो इज 1:2. एरियाज की रेशियो क्या होगी? इनका स्क्वायर, so that's going to be 1:4. So that's 1:4. ठीक है, अगर नीचे वाले का एरिया, छोटी ट्रायंगल का एरिया वाज 1, बड़ी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी 4 इन दैट केस. ठीक है, उनके लेंथ की रेशियो ये आ रही है. अगर नीचे वाला R होता, ये रेडियस है, तो डायमीटर इज 2 times R, तो 1:2 आपकी आ रही है लेंथ, ये कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ, तो आपकी एरिया क्या हो जाएगा? दैट्स गोइंग टू बी 1/2 का स्क्वायर. Then it says, सर ये सर 2 रेडियस आपने लिए हैं सर, ये एक OC ली है और एक AO ली है ना? जी जी बिल्कुल. सो हम बेसिकली इस ट्रायंगल के अंदर देख रहे हैं, ये 2 ट्रायंगल्स है ना जो हमने सिमिलर प्रूव की थी, ADC एंड OGC. इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर वी आर बेसिकली यूजिंग AC और OC और AC यूज कर रहे हैं. ठीक है, OC क्या है? OC इज दिस नीचे वाली लेंथ. अगर वो लेट्स से 1 थी, तो AC क्या है? AC इज द डायमीटर, दैट्स 2 times हो जाएगा. ठीक है, तो 1:2 हो जाएगा. अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OGC, तो वही वाली ट्रायंगल जो ऊपर भी हमने यूज की, विद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. अच्छा, ABCD क्वाड्रिलेटरल कहां पर है? ABCD, तो पूरा जो क्वाड्रिलेटरल, बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल है, उसके साथ इसकी रेशियो क्या है, हमें ये फिगर आउट करनी है इसकी एरिया. ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स फिगर दिस आउट. यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, और ओके, सो we know that this area now, so let me erase the rest of the stuff from here. अगर हम ये रीजन कंसिडर करें, दिस ट्रायंगल हियर, इसका एरिया में कितना निकाला है टोटल? अगर हम रेशियो वाइज देखें, if this was 1, if this area was 1, what about this whole area? ये पूरा एरिया कितना होगा? जो ग्रीन में है, हमने कहा ये फिर कितना होगा? ये 4 हो जाएगा. 4 हो जाएगा, ये पूरा एरिया 4 हो जाएगा, ये हमने पहले निकाला अभी. ठीक है, so this would be 4. अच्छा, अगर ये 4 है, तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा? You know, ये नीचे वाली ट्रायंगल है, it's exactly the same as this upper triangle. ऊपर वाली ट्रायंगल में वही बन रहा है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, तो 8 हो जाएगा, right? This part is 4, but upper part is also going to be 4. अगर ये 1 है छोटी ट्रायंगल, तो पूरा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, that's going to be 8. 1. हाँ, Okay?
तो अगर वो नीचे वाला 1 था, ट्रायंगल 1 थी अगर, तो पूरी जो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, दैट्स 2 टाइम्स दिस ट्रायंगल। ADC को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं उसके एरिया को, दैट्स गोइंग टू बी 8 फ्रॉम देयर। ठीक है, डज दिस मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. Now that was a fairly complicated one. Circle से question अक्सर जो है ना, अक्सर तो नहीं, but yeah, a lot of times they come out to be slightly challenging. So that's what we had to do there. Let's move to the next one. अच्छा, next हमारे पास है so this looks like trigonometry or सर एक mensuration. चीज का ये पार्ट एक दफा दिखाना सर, कौन सा part? बस यहीं पे रखना लास्ट वाला। ठीक है, Okay. ठीक है सर। Sir, So the ventilation shaft for a tunnel is in the shape of a cylinder. So there's some cylinder. The cylinder has radius 0.4 and the length is 15 meters. Okay, cylinder का volume figure out करना है. Volume का formula क्या होता है? Pi r square h. So pi into radius. Radius is 0.4. उसका square. Length for 15 meters. हमारे पास तो height है यहाँ पे formula के अंदर. So basically आपने cylinder को इस तरह से place किया होगा, right? तो उसमें height को ही वो basically वो क्या कह रहा है, उसको लेंथ कह रहा है, राइट? सो द सेम थिंग, दिस इज द लेंथ बेसिकली। सिलेंडर को अगर आप इसको वर्टिकली रखते थे, हम इसको हाइट कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू ऑपोजिट एंड्स, दैट इज द हाइट फॉर अस, राइट? तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से एंड वी गेट अ रिजल्ट फ्रॉम दिस। तो देख लें क्या आता है। व्हाट डू यू गेट हियर? 7.54. 7.54. So that's 7.54. Just have to apply the formula and that's it. That's it. Now the diagram shows Sir, the हमने cross. एंड वाले आंसर को हमने 3 सिग्निफिकेंट करना होता है ना? जी, लास्ट आंसर को, बिल्कुल एंड वाले आंसर को, ठीक है। अच्छा, the diagram shows the cross section of the tunnel. क्रॉस सेक्शन क्या होता है? क्रॉस सेक्शन होता है जहां पे आपका अगर एक टनल है ना, सो क्रॉस सेक्शन का मतलब है कोई भी आप प्रिज्म देख लें, फॉर एग्जांपल प्रिज्म आपने देखे हों इस तरह के प्रिज्म लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। क्रॉस सेक्शन होता है जो उसके एंड्स है ना, they are basically the same shape. ये हमारे पास एक प्रिज्म है लेट्स से, और वो उसका एंड मैंने वहां पे बनाया, so this is what the prism looks like, let's say. तो जो ऑपोजिट एंड्स पे सेम फिगर्स होती है ना, एग्जैक्टली सेम फिगर्स। सो इसके केस में फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, तो दोनों एंड्स के ऊपर सेम आ रही है। ये जो सेम फिगर्स दोनों एंड्स के ऊपर आ रही होती है ना, इसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। दिस इज द क्रॉस सेक्शन। आप उसकी एक साइड से देखते हो, दूसरी साइड पे आपको एग्जैक्टली वही फिगर नजर आती है थ्रू आउट। सो प्रिज्म के केस के अंदर हम इस तरह से देखते हैं, ऑपोजिट एंड्स के ऊपर यू गेट एग्जैक्टली द सेम शेप। तो यहाँ पे आपके पास एक क्रॉस सेक्शन इसने शो किया हुआ। नाउ इट्स अ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है? आप किसी सर्कल के अंदर एक कॉर्ड बना दो, ये दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है। बड़े वाले को हम मेजर सेगमेंट कहते हैं, छोटे वाले को माइनर सेगमेंट कहते हैं, राइट? सो वी गॉट टू segments here. अच्छा, now we have the cross section given. We're given that the center is O. The radius of the circle is given to be 4.5, and the angle AOB is 110. We have to find the area of the cross section of the tunnel. अब segment के area निकालने का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, right? तो हम क्या करेंगे? हम sector का area निकाल लेंगे, ठीक है? We can find the area of the sector, and we can add to that the area of this triangle. ठीक है, सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। बड़े वाले सेक्टर का उसका एंगल क्या होगा? if this angle is 110, the lower angle, the upper angle is going to be 360 minus 110, which is 250 degrees. ठीक है, so all we have to do is we have to find the area of the sector of the major sector. Remember, ऊपर वाले सेक्टर की बात कर रहे हैं, area of the major sector plus the area of the triangle AOB. मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा ओवर 360, so the angle is 250 divided by 360 multiplied by pi r square, so pi into 4.5 का square plus the area of the triangle AOB
इसमें हम हाफ इंटू ए बी साइन सी वाला लगा सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो 4.5. दिस इज ऑल्सो रेडियस. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा? हाफ इंटू 4.5 इंटू 4.5 इंटू साइन ऑफ दैट एंगल, दैट इज 110. ठीक है, इनको इवैल्यूएट कर लेंगे, इनको ऐड कर देंगे, एंड दैट्स इट. दैट्स द एरिया ऑफ दैट होल थिंग. ओके, यस सर. सो यहाँ पे आता है 4.18. So this is 44.18, and you will get here. So I'm getting 9.51. 9.51. And the total turns out to be 53.7 meter square. Okay. Yes. ये आपके पास इसका पूरे का एरिया आ गया. उन दोनों को सम कर दिया. अच्छा. Then it says the length of the tunnel is 1750 meters. अब देखिए ये क्रॉस सेक्शन है टनल का. So, आप देखें एक तरह से आप कहते हैं एक साइड से आप टनल में एंटर हो रहे हो ना, एक साइड से आप एंटर हो रहे हो, आपको ये नजर आ रहा है, इधर एक तरह से डोर है ऑफ द टनल, तो ये आपको ये ओपनिंग है टनल की. अब इसकी लेंथ जो है टनल की, दैट इज 1750 meters. इतनी लेंथ है टनल. ठीक है. Now a car drives through the tunnel at an average speed of 45 kilometers per hour. Work at the time the car takes to travel through the tunnel. Give your answer in minutes and seconds. अच्छा, ये तो आप सिर्फ इसका टाइम निकालना है, मिनट्स और सेकंड्स में चाहिए. तो हम क्या करते हैं, इसको पहले आवर्स में निकाल लेते हैं. ठीक है, दिस इज इन किलोमीटर्स per hour. This is in meters. We have to be careful about the units. इसको पहले किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे. 1750 meters. That's the same thing as saying 1.75 kilometers. ठीक है, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया. Now we can find the time. The time is equal to distance over the speed. Distance कितना है? 1.75, and the speed is 45. What does this give you? Sir, 0.0.038. 0.038. 0.38. 0.038. ये अच्छा, you have to be a bit careful. आपने कैलकुलेटर्स पे देखोगे, आपको ना अक्सर वो इस तरह से आंसर देता है 0.03. फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर my calculator is giving me 0.038 and then a dot above that. Is that what you were getting as well? सर मुझे तो वो पूरा ही दिखा रहा है ऐसे. मुझे तो पूरा दिखा. अच्छा ठीक है, 888. आप अगर पूरा दिखा रहा है तो that's okay. So 0.038 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे. We have to use more accuracy there. ये 8 रिपीट हो रहा है आगे. Accuracy ज्यादा रखनी है. इतनी accuracy के ऊपर you may end up doing a mistake there. Okay. अच्छा, ये डॉट का मतलब होता है, आपने देखा होगा पहले, डॉट का मतलब ये रिपीट हो रहा है, 8 नंबर रिपीट हो रहा है. सो कुछ कैलकुलेटर्स इस तरह का रिजल्ट दे देते हैं, 8 के ऊपर डॉट आ रहा है. उस पे एक तो तरीका ये है कि आप दोबारा से एक ना वो बटन होता है इसके ऊपर, दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस. इस तरह का बटन होता है. साइंटिफिक और डेसिमल में कन्वर्जन का ये मेरा ख्याल है, इसका ये मतलब होता है शायद ये बटन होता है एस और डी. इसको आप क्लिक करते हो दोबारा से तो उसको फिर वो कन्वर्ट कर देगा इस फॉर्म के अंदर 0.3888 को खुद ही वो उसमें कन्वर्ट कर देगा. ये डॉट वाली नोटेशन, सो यू जस्ट हैव टू बी बिट केयरफुल बिकॉज़ अक्सर उसमें मिस्टेक होती है. अच्छा, यहाँ पे Manahil was asking what a person. No, this is not AB. This is not AB. So how to explain this to you? So this is the cross section of the tunnel. ये आपका टनल का क्रॉस सेक्शन है. आप एक रोड पे जा रहे हो, आगे एक टनल शुरू हो रहा है, आपको आपके जो व्यू में ओपनिंग है ना टनल की, वो आपको ये नजर आ रही है इस शेप के अंदर. दिस इज द ओपनिंग ऑफ द टनल. So this is what it looks like. This is the opening of the tunnel. Now this tunnel goes, for 1750 meters. ये टनल आज आ रहा है, ये रोड है साथ, ये आपकी ओपनिंग थी, यहाँ से आप एंट्री हुए हो इसके अंदर इस ओपनिंग से, and then this length of the tunnel is 17450 meters. और दूसरी साइड के ऊपर भी you will have exactly the same kind of opening. वहां पे भी आपके पास ये दोबारा से ये फिगर आ रही होगी उसी तरह की at the end of the tunnel.
So this length, सर बहुत प्यारी sorry, सर कुछ नहीं so my drawing is like that, but that's what you get, right? ये जो टनल नीचे वाला है और जो ऊपर वाला टनल है, इसके दरमियान में जो रोड जा रही है, sorry, टनल तो सेम है, it's the whole tunnel, complete tunnel, ठीक है, from one end to the other. दोनों एंड्स जो हैं उस टनल के, they are in this shape, ठीक है, उसकी जो ओपनिंग है टनल की दोनों साइड्स के ऊपर, that's of this shape. जो पूरे टनल की लेंथ है, that is 1750 meters. Does that make sense? तो आपकी गाड़ी यहाँ से एक साइड से आ रही है, उस टनल में एंटर होती है, दूसरी साइड से वहां से निकल जाती है. Okay, all right, good. So that's what cross section means. कि वो फिगर के एक साइड आपको नजर आ रही है, दूसरी साइड पर दूसरे एंड, दूसरी जो शेप होगी इस तरह की, वो दूसरे एंड पर होगी उधर. अच्छा, ये हमारे पास आ गया. This is in hours. You have to convert this into minutes and seconds. ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. अभी आवर्स में था ना, हम इसको आवर्स में लिखते हैं. Let's write 0.03888. अभी मिनट्स में कितना आएगा और सेकंड्स में कितना आएगा. Let's do it step by step. इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो मिनट्स में हो रहा है 23.3328. Okay, so when we convert it into minutes, you get 2.3333. That's what I'm getting. Is that what you're getting as well? नो सर मेरा आ रहा है 23.332. 60 से मल्टीप्लाई करो ना. आपने गलत input किया है. तो आवर्स है ना, उसको 60 से मल्टीप्लाई करो तब आएगा. मैंने ना 0.0103 नहीं लिखा, मैंने 0.3 लिख दिया. एक मिनट सर मैं सही करता हूं. Exactly. So this is 2.3333. ठीक है, तो मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा. ठीक है, अब मिनट्स कितने हो गए आपके पास? 2 मिनट्स तो आपके कंप्लीट हो गए. 2 मिनट्स आ गए हमारे पास. अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करें, इस स्टेप के ऊपर वी आर बेसिकली मल्टीप्लाइंग बाय 60. 60 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास मिनट्स आ गए. अब मिनट्स को हमने ब्रेक डाउन कर दिया मिनट्स और सेकंड्स के अंदर, तो 2 मिनट्स हो गए. 0.3333. ये हमारे पास मिनट्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, that is 20. So this is 20. So 2 minutes and 20 seconds. ठीक है, तो आपने पहले आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया. कितने कंप्लीट मिनट्स हुए आपके पास? 2 कंप्लीट मिनट्स. that comes here and 0.333 वो आपका इधर चला गया, उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0.333 को, that gives us 20. that is the number of seconds that you have. All right, now the diagram shows the position of the tunnel entrance T and 2 road junctions P and Q on horizontal ground. Okay, अच्छा, T is the tunnel entrance. तो T कहीं पे tunnel की entrance है, जो ऊपर उसने cross section बनाया हुआ था उसका. This was the entrance of the tunnel, and there are 2 road junctions that you see here. P and Q junctions, यहाँ से multiple roads निकल रही हैं. एक P पे एक junction है, so एक road right पे निकल रही है, एक ऊपर को निकल रही है, and there's another junction at Q. Okay, that point right up there. अच्छा, Q is due north of P, so it's right above there. बिल्कुल ऊपर है आपके पास. P and T is a bearing of 062, so आपको ये 62 degrees angle यहाँ पे नजर आ रहा है. PT is 450, your length दी हुई है. Calculate the bearing of T from Q. Okay, so T की bearing from Q, so Q के ऊपर north बनाना है. From के बाद जो लिखा होता है उसके ऊपर आपने north बनाना है. और bearing of T, so we basically need this, go clockwise from there. We need this angle. ये angle हमें चाहिए. ठीक है, इस angle के लिए क्या कर सकते हैं? We can find the angle that is inside there. Let's find this angle. Let's call this theta. So we have a pair 720 and the angle opposite of that. We have a pair there. बाकी दूसरे पेयर में से एक एंगल है, साइड निकालनी है. We can use sine rule. You can say sin theta
divided by 450, that's equal to sine of 62 degrees divided by 720. ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, we get sin theta equal to 450 into sine 62 divided by 720. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा sin theta that's equal to 0.5518 and theta turns out to be sin inverse करेंगे इसका. Make sure your calculator is in the degrees mode. कभी कभी गलती से वो रेडियन में चला जाता है. Make sure you have it in the right mode. So I get 33.5 degrees from here. थीटा मेरे पास आ गया 33.5 degrees. अब वो बेयरिंग चाहिए मुझे, तो ऊपर बेयरिंग नजर आ रही थी. Bearing is going to be 180 minus 33.4. That gives me 146.5. ठीक है, so this bearing is therefore 146.5 degrees. All right, अच्छा, let's look at this one. A rectangular picture ABCD is placed inside a rectangular frame. So you outside you've got a frame, inside you've got this rectangular picture जो आपको ग्रे के अंदर नजर आ रही है. The length AB is in the picture is 3 times its height. Okay, think about this. AB, this length is 3 times the height. ये जो AD height है उसके 3 times. अगर ये x है यहाँ पे जो उसने दिया हुआ है, तो AB is supposed to be 3 times x. तो 3 times है इसके, यहाँ पे 3x रख दिया. The width of the frame is 2 centimeters of the frame. अच्छा, frame की width 2 centimeters है. सारी sides को देखें 2 centimeters की width है. Okay. Now form an equation in x and show that it simplifies to this thing. उसने कहा area of the picture is 476. ठीक है, total area आपको निकालना है of the picture. Area of the picture and the frame. अच्छा, ठीक है. Area of our frame का total frame और picture का total area is 476. Let's find that total area. It's a rectangle, right? Y वाला rectangle. कितनी उसकी length width कितनी होंगी? If AB is 3x, ये पूरी length बाहर वाली length कितनी हो जाएगी? 3x plus this 2 and this 2. It becomes 4 in total. Sorry, over here. So we have 3x, this and this 2 and this 2. It becomes 4 in total. So we say 3x plus 4 here. Okay, the length हमारी 3x plus 4 होगी. Is that as a width? We know that this is x. BC is x. That means it's x plus this 2 and this 2. Total कितना हो गया? It becomes x plus 4. ठीक है, अब एरिया क्या बना टोटल? It's 3x plus 4, that's the length, into the width, that's x plus 4, and this should be equal to 476. That is the equation that we had to form. Now we just simplify this, right? So it's a 4-mark question. That's a lot of marks for this. आपको सिर्फ क्या करना था, length और width निकालनी थी. Once you have found that length and width, आपने just उनको multiply किया and you equate that to 476 और उसको simplify कर लेंगे. So let's do that. Simplify कर लेते हैं. यहाँ पे आ जाएगा 3x square plus 12x plus 4x plus 16 minus 476 is equal to 0. 3x square plus 16x minus 460 equals 0. Right? So that's what we had to show. हमने सिर्फ ये show करना था, ये इस पे simplify होती है. We don't have to solve it yet. ठीक है, next part में आपसे वो कहते हैं solve this equation. Okay, let's solve this equation. उसने यहाँ पे ये नहीं कहा हुआ कि give your answer correct to 3 decimal places या 2 decimal places. ठीक है, जब उसने वो दिया होता है इसका मतलब होता है quadratic formula ही use होगा. यहाँ पे उसने नहीं दिया हुआ, so most likely factorization is going to be possible. Right? So let's see. हम quadratic formula apply करना चाहते हैं वो कर सकते हैं फिर भी. That's not a problem. How do we think about factorization here? These are big numbers. तो 460 को 3 से मल्टीप्लाई किया. Let's do that. 460 into 3. That's 1380. 1380. ठीक है. अच्छा, 1380 आपके पास आता है. आपके पास दरम्यान में 16 है और ये यहाँ पे नेगेटिव साइन है. माइनस साइन का मतलब ये होता है
आपको दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनको माइनस करके आपके पास 16 आता हो। दो फैक्टर्स ऐसे जिनको माइनस करके 16 आता हो। 1380 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको माइनस करके 16 आता हो। ठीक है, इसका तरीका क्या होता है? यू टेक एनी टू रैंडम नंबर्स जिनका डिफरेंस 16 आता हो। सो लेट्स से 30 और आपने इस तरह के नंबर जिनका आप सोच सकते हो कि शायद उनका प्रोडक्ट जो है ना वो 1380 किस तरह से बनता हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक 25 एंड 9। ये 25 और 9 का प्रोडक्ट क्या होता है? का डिफरेंस क्या होता है? 16। लेट्स ट्राई 25 and 9। 25 into 9 that gives me 225। ये तो बहुत ही छोटा नंबर है, so that is not going to help। Let's try bigger numbers। 30 and 14। 30 और 14 ट्राई करते हैं। What does that give me? 30 into 14, that's 420। That's still a fairly small number। तो हमें बड़े numbers ट्राई करने चाहिए। Let's फॉर्मूला से जल्दी हो जाएगा। sorry सर फॉर्मूला से सर जरा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सर आप बड़ा नंबर है तो सर टाइम भी तो लेगा ना उसमें। इतना टाइम मिलेगा आपको? आपने कौन सा खुद से करनी है कैलकुलेशन? कैलकुलेटर पे करना है। 50 और 34 ट्राई कर लेते हैं। 50 and 34 that gives me 1700। बहुत बड़ा हो गया। अब कैलकुलेटर पे नंबर्स ट्राई करते जाएं जिनका डिफरेंस 16 आता हो, राइट? I'm going to try 40 and 24। 40 and 24 that gives me 960। अच्छा 45 and 29 that doesn't give me 46 and 30। that gives me that। so 46 and 30 मेरे पास आ गया। 46 and 30 इनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आता है। सो अगर आप ये क्विकली कर सकते हो कैलकुलेटर के ऊपर, आई वुड प्रेफर दैट यू डू फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आपकी मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप ये फिगर आउट कर लो एक दफा। क्वाड्रेटिक फार्मूला में अक्सर कोई ना कोई प्लस माइनस का एरर हो जाता है, डिवीजन में कोई मसला हो जाता है। तो अगर आप फैक्टराइजेशन की जल्दी से आपको मिल जाती है, आपने करना क्या है? दो नंबर्स ऐसे लेने हैं इनको मल्टीप्लाई करके ये आता हो, और फिर आपने देखना है यहाँ पे माइनस साइन है या प्लस है। माइनस है तो उनको माइनस करके डिनोमिनेटर नंबर आना चाहिए, प्लस करके डिनोमिनेटर नंबर आना चाहिए। अब यहाँ से स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट आपको ये होना चाहिए 16 है ना। 16 कोई भी दो नंबर्स दें जिनको सब्ट्रैक्ट करके 16 आता हो। ट्राई करते जाएं कि आपको उससे ऊपर जाना है या नीचे आना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 40 और 24 ट्राई किया था, वो मेरे पास आ रहा था 900 समथिंग आई थिंक। मैंने 50 और 34 ट्राई किया था, वो मेरे पास आ रहा था 1700 समथिंग। मुझे पता है इनके दरम्यान में कहीं पे होएगा। ठीक है, तो मैं दरम्यान में मैंने 45 ट्राई किया, 45 डिड नॉट वर्क। वो भी थोड़ा सा नीचे आ रहा था, मैंने 46 ट्राई किया, दैट वर्कड, राइट? सो फैक्टराइजेशन में ये है कि आपको कंफर्म हो जाता है that your working is correct in just a couple of steps। So if we say 3x squared plus 46x minus 30x minus 460 equals 0। यहाँ से क्या आया? 3 common तो हम ले सकते हैं। So we have x common here। 3x plus 46 minus, take 10 common here, and we have 3x minus 3x plus 46 equals 0। ठीक है, अभी दोनों ब्रैकेट जब सेम आ गई, that confirms कि आपकी वर्किंग ठीक है। ये हमारे पास आ गया x minus 10 and 3x plus 46। x is equal to 10 or x is equal to minus 46 over 3। आ गया 10 and minus 46 over 3। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है, आप उससे कर लो। जस्ट मेक श्योर दैट यू are not doing any careless errors there। उसमें बहुत errors जो है वो बच्चे करते हैं for some reason। So this is how you do it। Okay, find the height and the length of the frame। Okay, अब हमारे पास दो वैल्यूज ऑफ x आ रही हैं, एक तो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव लेंथ तो नहीं हो सकती। तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे इसकी लेंथ राइट की, इसमें हम x की पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमारी क्या थी? लेंथ 3x plus 4 and x plus 4 हाइट थी। Let's do that। 3x plus 4 and x plus 4। length height was x plus 4 and the length was 3x plus 4। 3x plus 4 क्या आता है? x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 10। That's 3 into 10 plus 4, that gives us 34। 3 10 plus 4, that's x plus 4, 10 plus 4, that gives us 14। So we have
14 here and 34 here. So that's the length and the height of that rectangle. अच्छा, उसके बाद क्या है? We are given that the frame is made from wood. The wood is 5 millimeters thick. Okay. अब देखें, ये जो frame है बाहर वाला, it's made of wood और इसकी thickness है कुछ, right? कुछ thickness है इसकी. 3 dimensions में चला गया वहाँ पे. इसकी कुछ thickness है. Thickness कितनी है? This is 5 millimeters. The mass of 1 centimeter cube of the wood is 0.7 grams. Calculate the mass of wood used in the frame. Okay, now that's going to have that's going to require your unit calculations. तो हमारे पास बहुत सारे different units आ रहे हैं यहाँ पे. उसने कहा mass of wood used in the frame आपने find करना है. Now let's take care of the units first. हमारे पास जो ऊपर सारी लेंथ दी हुई थी, they were in centimeters. Okay, so ऊपर वाली लेंथ सारी centimeters के अंदर थी, ठीक है, and this length here is in millimeters. Okay, इस लेंथ को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, because यहाँ भी उसने सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है. Let's convert this thickness to centimeters. 5 millimeters को आपने किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर्स के अंदर. क्या करेंगे? Millimeters to centimeters. By 10 multiplied by 10. Remember, meter के अंदर क्या होता है? 1 meter has 100 centimeters and 1 meter has 1000 millimeters. Right? So 1 centimeter basically has 10 millimeters. 5 millimeter को आप centimeter में convert करोगे तो आपको क्या करना होगा? 5 over 10. Not 0.5 centimeters. ठीक है? Now you have the length of the rectangle, you have the height of the rectangle, लेकिन ये आपके पास पूरे rectangle की height है, right? पूरे rectangle की. So if we have this shape here, इसमें frame कितना है? इसमें frame है. सर इसका एरिया अगर माइनस कर लें, yes, जो अंदर पिक्चर है. yes, exactly. तो frame सिर्फ बाहर वाला part है, ठीक है? Frame सिर्फ बाहर वाला part है. उसमें से हमें अंदर वाला part subtract करना पड़ेगा to find the volume of the frame. Let's find the volume of the frame first. Let's do that calculation here. So volume of frame find करते हैं. Volume of frame कैसे आएगा? सबसे पहले तो हमें area निकालना पड़ेगा उस picture का. So let's do that first. So let's find the area of the picture. Area of the picture. Area of picture कितना है? X into 3x, है ना? हमारे पास क्या थी? एक लेंथ जो थी पिक्चर में, 3x. ये 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. X into 3x. X की वैल्यू क्या है? So it's actually 3x square आता है. X की वैल्यू is 10. 3 into 10 का square, which is 300 centimeter square. This is the area of the picture. ठीक है. हम area of frame एक तरह से total area of the rectangle निकाल लेते हैं. So निकाल लेते हैं area of frame that's visible to us. Area of frame आपके पास ऊपर से आप देख रहे हो, surface area जो आपको नजर आ रहा है ऊपर से. What is that? That is going to be the outer region. That's 34 into 14. ये हमारे पास outer बड़े वाले rectangle के area है, उसमें से हम 300 minus कर देते हैं. That will give us the area of the frame that we can see from front. 34 into 14 minus 300. अंदर वाले picture के area को हमने subtract कर दिया. So this is 176. 176 क्या चीज है? बाहर वाले region का ये जो नजर है ऊपर rectangle था, उसमें बाहर वाला जो region है unshaded region, उसका area is 176. हमें क्या करना है? Volume of frame निकालना है. Volume of the frame. ये हमारे पास एरिया है. अब इसको इस हाइट से अगर हम रेशियो लगा लें इसके, जैसे कि 1 सेंटीमीटर ऑफ द वुड 0.7 है, तो 176 सेंटीमीटर
नहीं सर, जो स्क्वायर है वो क्यूब है। हाँ, तो अभी तो पहले हमें वॉल्यूम फाइंड करना। वॉल्यूम निकालना है ना पहले, अभी तो हमारे पास सिर्फ एरिया था उसका ऊपर से, हमें वॉल्यूम निकालना है पहले। सो व्हाट इज द ओके वॉल्यूम? ओके। द वॉल्यूम इज 176 multiplied by 0.5. That's going to be 87, I think. 87 centimeter cube. This is the volume of 88, sorry. So this is 88. This is the volume of the frame. ठीक है, ये आपका फ्रेम का वॉल्यूम है 88 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नाउ वी कैन यूज रेशियो। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब को 0.7 ग्राम चाहिए तो 88 सेंटीमीटर क्यूब कितना चाहिए होगा? That will be 88 multiplied by 0.7. That will turn out to be 61.6 grams. 61.6 grams. Is that okay? यस सर। सर आप 10 AP से समझा देंगे सर? वो काफी मुश्किल लगता है कि मतलब जो क्या हाफ चीज? पेपर में 10 क्वेश्चन नंबर 10 का ए ना थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ये पार्ट? यस सर। सर इसमें पता ही नहीं चलता कि क्या करना है, अगर कोई दूसरे क्वेश्चन में भी आया ना पास ये तो पता ही नहीं चलता कि क्या करना है, इसमें कैसे करना है। आप किसकी बात कर रहे हो? क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स जो क्वाड्रेटिक पे आती हैं उसकी? नहीं सर, सर ये ए वाले जिसमें फॉर्म एंड इक्वेशन इन एक्स, क्वाड्रेटिक वाली तो हो रही है, इसमें इक्वेशन बनाने में काफी मुश्किल आता है। आप बता देंगे? आपने देखना है ना आपको क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। So आपको देखना है आपको इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। So you are given this information that the area, the total area there is equal to this. तो उसने आपको कोई पॉइंट आपको बताया होगा और फिर उसको यूज करके आपको वो इक्वेशन बनानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि एरिया ऑफ द पिक्चर एंड द फ्रेम इन टोटल इज 476। तो आपने उसने एक नंबर दिया हुआ है आपको, आपने अपनी तरफ से निकालना है एरिया यूजिंग द डिटेल्स दैट यू हैव ऑन द फिगर। उनको यूज करके आप अपना एरिया निकालोगे। हमने निकाला दैट्स 3x + 4 × x + 4। हमने उसको इक्वेट कर दिया उसके साथ जो उसने इंफॉर्मेशन दी हुई थी हमें 476। तो बेसिकली आपको देखते हैं कि उसने क्या इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, आप किस तरह से वो अपने एंड से कैलकुलेट कर सकते हो, फिर उनको इक्वेट कर सकते हो। ठीक है सर, समझ आ गई। तो आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आपके वो स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो मतलब आप किसी क्लास के एंड पे आप मुझे बता दो कि ये क्वेश्चन फॉर इंस्टेंस ये नहीं समझ आ रहा, तो वो हम उस तरह कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, मैं वो okay. Let's think about this now. So it's a 3D figure. It could require some trigonometry and some mensuration. Let's think about this. So a vertical mast XY is positioned on horizontal ground. The mast is supported by 4 cables attached to the mast at P. So a vertical rod type है जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, XY. 4 cables are attached at P. P के ऊपर 4 cables आपको नजर आ रही हैं, एक A पे जा रही है, एक B पे जा रही है, एक C पे जा रही है, एक D पे आ रही है, so on. ठीक है, and they are connected to the ground at A, B, C and D. नीचे आपको ground पे नजर आ रही है, वो connected है। ठीक है, अच्छा, now yeah, okay, so A, B, C, D नीचे points हैं ground के ऊपर, and y is the center of the square ABCD. ABCD जो है वो square है, उसमें सारी lengths equal है, ABC and BC, CD and AD they are all equal, and y is exactly in the center of the square. ठीक है, y बिल्कुल center में है। PY आपको दिया हुआ है, that's the vertical height here, that is 7.5 meters. ठीक है, ये सारी lengths दी हुई हैं आपको। अच्छा, now it says given that AB is equal to 3.65 and show that AY is equal to 2.58. अच्छा, इस तरह की कोई भी 3D फिगर होगी, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, आपके पास एक पार्ट होगा वर्टिकल, बाकी पार्ट होगा हॉरिजॉन्टल। जहां पे वो दोनों कनेक्ट होते हैं आपस में, वहां पे एंगल्स हमेशा सारे 90 बनते हैं। सो बेसिकली Y पॉइंट के ऊपर वो वर्टिकल बना हुआ है, Y के ऊपर कोई चीज खड़ी हुई है, ठीक है, y के ऊपर कोई चीज जो है वो अटैच्ड है वर्टिकली। y के ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे वर्टिकल के साथ, राइट, py, सो बेसिकली
PY, angle PY, and then you attach anything with that, that's on the ground. कोई भी चीज आप ग्राउंड वाली इसके साथ थर्ड पॉइंट निकालते हो, ये सारे एंगल्स कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे. फॉर इंस्टेंस PYA, दिस एंगल, दिस इज 90 डिग्री. ठीक है. PYB, दिस इज 90. PYC, दिस इज 90. PYD, दिस इज 90. ये सारे एंगल्स 90 डिग्रीज होंगे. 3D के अंदर ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है. जिस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल बनता है, उस वर्टिकल के एंगल्स उस पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी लाइंस जा रही हैं सारी, उनके साथ सारों के साथ 90 बने. इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना है. अच्छा, नाउ गिवन दैट AB is 3.65, AB is 3.65, very good. AB is 3.65, so this is 3.65. Show that AY is equal to 2.58. AY उसने कहा है कि ये 2.58 आपने शो करना. Okay. Now, how do you think about this? 3.65 है तो okay. So we can think of it this way. It's a square, right? जो आपके पास ये नीचे फिगर है, it's a square. आपको नजर वो rhombus की तरह आ रहा है या even शायद पैरेललोग्राम की तरह आ रहा है. उसने आपको बताया it's a square, क्योंकि वो 3D के अंदर आपको शो किया हुआ है ना, तो उसके एंगल सारे डिस्टॉर्ट हो जाते हैं. It's a square basically that looks something like this. ये स्क्वायर आपके पास. ठीक है. अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करें, we have A here, we've got B here, we've got C and D. Y is right in the middle. ये आपका Y है. ठीक है. उसने आपको दिया क्या हुआ है? उसने आपको बताया है कि AB is 3.65 and AY is 2.58. अच्छा नहीं, वो आपको शो करना है, AY शो करना है. That is 2.58. So ये सिर्फ ये लेंथ दी हुई है 3.65. Now since it's a square, we know that if this is 3.65, this side here should also be 3.65, right? Now AY आपको बनाना है, AY आपको उसकी लेंथ निकालनी है. What you can do is we can make a right angle triangle here that looks like this. ये आपको right angle triangle बन गई. Now this length, let's call this point something. Let's call this point X. तो नहीं यूज होगा कहीं पे? Yeah, let's call this point X, जो मिड पॉइंट है. ठीक है. Y अगर मिड पॉइंट था सर्किल का सेंटर, स्क्वायर का सेंटर है, तो ये X जो है मिड पॉइंट होगा AB का. यहाँ पे लेंथ कितनी बनी? 3.6 divided by 2. 3.6 divided by 2, that is 1.825. ये लेंथ भी 1.825 होगी. ठीक है. और ये जो वर्टिकल लेंथ है ये भी कितनी होगी? 1.825, because that's also the half of that length. इस साइड का हाफ है, that's 1.825 there as well. You've got a right angle triangle. आपको AY चाहिए. AY square is going to be equal to 1.825 का square plus 1.825 का square. You're just using Pythagoras. यहाँ से आपके पास AY लेंथ आ जाएगी. तो आप देख लें क्या आता है. इसको स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, so this length is 6.66125, and then square root of that. When you take square root of that, it turns out to be 2.58, and that is what we were required to show there. ठीक है. Is this fine? Yes, sir. अच्छा. Then it says calculate the length of one of the cables used to support the mast. Okay, one of the cables. अब इस किसी भी केबल की आपने लेंथ फाइंड करनी है. सारी केबल्स की लेंथ इक्वल है ना, क्योंकि नीचे स्क्वायर है, Y बिल्कुल सेंटर है, सेंटर के ऊपर, तो सारी लेंथ्स की केबल्स, सारी केबल्स की लेंथ जो है they're equal. आपके पास ये लेंथ आ गई 2.58, ये आपने शो कर दिया. PY was given, PY 7.5, जो वर्टिकल लेंथ है, that's 7.5. मैंने आपको बताया ना सारे एंगल्स राइट एंगल बनते हैं यहाँ पे. You can make a right angle triangle here. AYP. You can make this triangle. That's the triangle AYP. Y के ऊपर 90 बन रहा है. A is here. P is here. दोबारा पाइथागोरस लग जाएगा. Yes. So it always helps to convert that to a 2D figure. आप उसको जो triangle आप use कर रहे हैं उसको 2D बना लो साइड पे. That will help your understanding. So this is 2.58. ठीक है. PY कितना था? 7.5. आपको find करना है AP. Let's apply Pythagoras. So AP का square plus 2.58 का square should be equal to 7.5 का square.
ठीक है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा AP स्क्वायर इक्वल टू समथिंग दैट्स 7.5 का स्क्वायर minus 2.58 का स्क्वायर that is 49.59. यहाँ से पास AP आ जाएगा उसका स्क्वायर रूट 7 point something 7.04. That's 7.04 meters. Okay. So y पे 90 बन रहा था, right? PY is perpendicular, PY is vertical, AY is horizontal. यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है y के ऊपर. So we can make that right angle triangle है जहाँ पर PA फाइंड करना है आपको, ठीक है? हम बस केबल की लेंथ आ गई. अच्छा, APB, calculate the angle APB. Let's go to the figure again. A, P and B. ये angle हमें चाहिए. Okay, this angle here. Let's make that triangle here. Triangle APB. A, P and B. This is P, this is B. AB की लेंथ हमें पता है कितनी थी? That was 3.65. AP हमें पता है कितना है? AP is 7.04. ठीक है, अगर AP 7.04 है तो BP भी उतना ही होगा. BP is also 7.04. So it's basically an isosceles triangle. अब इसमें आपको एंगल फाइंड क्या करना है? You need this angle here. Let's call this angle theta. So you can either use the cosine rule. Cosine rule से भी आ जाएगा ये. ठीक है? If you want to do that, you can do that. There's a simpler way of doing this as well, and that is क्योंकि ये isosceles triangle है, इस वजह से आप इसको break down कर सकते हो दो parts के अंदर. आप यहाँ पे line बनाओ, right? क्योंकि isosceles है, this side is equal to this side. अगर ये मिड पॉइंट पे जाके आप लाइन बनाते हो इस तरह की, going to make a 90 degrees angle here. Does that make sense? अगर AB के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं उस लाइन उस पॉइंट को, P को ज्वाइन करते हैं मिड पॉइंट ऑफ AB के साथ, तो we get 7.04 here on this side और ये मिड 90 degrees angle बनता है, ठीक है? क्योंकि isosceles triangle. अब we can use this angle here. We can just find this angle. Let's call this theta. ठीक है, और ये लेंथ कितनी है यहाँ पे? 3.65 का हाफ. This is 1.825. हमने पहले भी फिगर आउट की थी. You can just use trigonometry, simple trigonometry to find theta. तो अगर उस थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है. परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे कौन सी रेशो होती है? sin theta is equal to 1.825 divided by 7.04. Since we have a right angle triangle, हम simple trigonometry use कर सकते हैं. We don't have to go to that complexity. That's cosine rule. यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? थीटा की वैल्यू आ जाएगी. So 1.825 divided by that thing, that is 0.25915. Sorry, that's sin theta. Theta क्या आ जाएगा? Theta is going to be 15.02 degrees. That's what I'm getting. 15.02 degrees. तो वो पूरा एंगल क्या हो गया? The angle APB, that's just 2 multiplied by this. 15.02 multiplied by 2, that's 30.04 or 2 to 1 decimal place. So निकाल होता है angles के लिए. That's just 30.0 degrees. Okay. Yes, sir. Divided by 2, that is 1.825 divided by 7.04. Sine inverse. Okay, we got it. And then we get that number. Okay, I think there is, I'm just checking whether the answer was correct. पिछले part का answer मैं शायद हमने गलत लिखा यहाँ पे. Just check that out again. Oh, okay. So there seems to be
7.5 था वो भी, 2.58 था। ये कैलकुलेशन सही थी हमारी पीछे? पीछे कैलकुलेशन चेक की थी किसने? Was it fine? There seems to be some error somewhere. Yeah, but I'm just looking for where that error is. P by is vertical. 2.58 ही लेंथ आ रही थी हमारी। 2.58 क्या था? AY था, that was 2.58. हमने शो किया था वहां पे। ओके, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना था। ओके, सो इस उधर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना था। This should have been, so nobody pointed this out, and Pythagoras वाले तो ट्राई कर रहे थे वहां पे। We had to apply it the other way. So it's AP square equal to 7.5 square plus 2.58 square. हम hypotenuse निकाल रहे हैं ना, तो hypotenuse तो उनका साम होना था। So AP square is equal to 7.5 का square plus 2.58 square, which is 62.9. उसका square root हमारे पास आता है 7.93. Yes, so that turns out to be 7.93. और यहाँ पर अगर हम इसको अपडेट करते हैं, 7.93. आप लोग भी सो रहे हैं, वहां पे गलत अप्लाई करे थे, क्या करे था? नहीं सर, उठे हुए हैं सर। मैंने पहले ऐसे ही करने लगा था, मैंने ट्रायंगल भी बना लिया हुआ था 2.5 और 7.5। मैं दोबारा 1.825 divided by this, we get 0.2301. Sin inverse क्या है इसका? This is 13.3, and then APB therefore is going to be 13.3 multiplied by 2, which is 26.6 degrees. Okay, so 26.6 आता है. So we applied that wrong there above. So okay. अच्छा, the angle of elevation of x from A. अच्छा, A के ऊपर एंगल बनेगा of x. अच्छा, so x को देख रहे हो आप A पे खड़े होके, A पे खड़े होके you're looking at x. ठीक है, उसने पूछा क्या है? Calculate the height xy of the mast. Okay, so basically अगर आप उस फिगर पे जाओ, you're looking at this angle here. Angle of elevation का क्या मतलब है? Horizontal ground पे खड़े हो, आप ऊपर जो देख रहे हो, कितना ऊपर देखना पड़ रहा है आपको? एंगल जितना आपको कितना ऊपर देखना पड़ रहा है? आपको देखना पड़ रहा है 77 डिग्रीज के ऊपर। ठीक है, अब ये सारे एंगल्स आप किसी के साथ भी बनाओ, एंगल इसके साथ बना लो, AD के साथ, आप AC के साथ बना लो, आप AB के साथ बना लो, all these angles are 77 डिग्री। नहीं सॉरी, उनके साथ नहीं, y के साथ, सॉरी y के साथ जो एंगल बनेगा, y के साथ जो एंगल बनेगा that is going to be 77। तो साइड नहीं कर सकते, ये वाला एंगल जो y के साथ बनेगा this is 77 degrees। this angle is 77 degrees। ठीक है, आप A पे खड़े होके x को देख रहे हो, तो जो y जिसके ऊपर x है, ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है that is 77 degrees। that is what we're given। ठीक है, so it helps to draw that figure in 2 dimensions। तो फिगर बना लेते हैं। point is right and this horizontal ground, point is vertical, this is A, this is A है, वो y है और ऊपर x है। we have this y here, remember y के ऊपर angles 90 बन रहे हैं सारे, and this is x, and we are given this is 77 degrees। अगर ये 77 है, AY हमने पहले निकाला हुआ है, that is 2.58। so AY is 2.58। वो आपसे क्या पूछ रहा है? Calculate the height, that is xy। xy चाहिए आपको। you have the angle, you've got a side, आपको ये height चाहिए, तो ये height perpendicular होगी xy इस एंगल के हिसाब से। 2.58 is the base, so you say
xy, that is the perpendicular, divided by the base, that's 2.58. That should be equal to tan of 77 degrees. Perpendicular over base is the tan, and you get xy from here. 2.58 multiplied by tan of 77. What do we get? We get 11.125, 11.175. It's the same thing, saying 11.8. 11.18 or 11.2. That is the height of that mast. Okay? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Then it says calculate the angle of elevation of x from the midpoint of AB. Okay. अब वही angle of elevation ही चाहिए हमें, लेकिन AB के midpoint से. So that's right here. AB का midpoint होगा कहीं पे, उससे आप ऊपर देख रहे हो x के ऊपर. Let's call this point x. अच्छा नहीं, x तो ऊपर था. Let's call this point something else. Call this CB है वहाँ पे. Let's call this M. That's the midpoint. इससे खड़े होके आपने ऊपर x की तरफ देखना है. अब कौन सी triangle relevant होगी? MY and then X at the top. Let's draw that triangle. अब midpoint पे खड़े हुए हो, AB के midpoint पे ये Y है, और आप ऊपर को देख रहे हो X की तरफ. This is the triangle that we're looking at. ये angle चाहिए. ये 90 degrees यहाँ पे दोबारा से बन रहा है. Is that okay? यहाँ पे आप M पे खड़े होके ऊपर को देखोगे X की तरफ. So this is the triangle that is basically this is the triangle that you get from there, x, y and m. First triangle को हमने अलग से बना लिया साइड पे, x, y, m. Now we already have some lengths here. पिछली फाइट में हमने height निकाल ली है. That is 11.18. x, y है हमारे पास. Now do we have any other length? x, m? No, we don't have that. my. My क्या है? My is just half of this. Yes, sir. So वो 1.825. Yes, तो वही जो हम ऊपर से यूज करते आ रहे हैं 1.825, 3.65 का हाफ उस 1.825. ये एंगल थीटा चाहिए आपको, अगेन परपेंडिकुलर और बेस. सो tan of theta is equal to 11.18 divided by 1.825 and you get theta from there. ठीक है, आपके पास आ जाता है 80.7 degrees from here. 80.725, which is just the same as 80.7, 80.7 degrees. That is the angle of elevation you're getting from there. Okay, is this fine? Yes, sir. The answer. So it took quite long. That's it about this October November paper. Tomorrow, inshallah, we will be starting May June 17. Okay, so this was October November 17. कल हम May June 17 इंशाल्लाह start करेंगे. Okay, so that's it for today. हम Yeah. 2015 तक जाएंगे ना? Sorry. हम कितने पेपर्स करेंगे? 2016 तक जाएंगे कि 2015 तक जाएंगे? अभी हम 16 तक जाएंगे. फिर 2020. फिर हम 2020 के में सारे वेरिएंट्स करने हैं ना, तो we just need to have enough time for that. फिर 2020 के सारे वेरिएंट्स कर लेंगे, इसके बाद कुछ टाइम एक्स्ट्रा बचा तो फिर हम वापस 15 पे आ जाएंगे. ठीक है, पहले 2020 के सारे वेरिएंट्स कर लेंगे ताकि we are sure that we're done with them. उसके बाद फिर एक्स्ट्रा हम या तो लेटेस्ट ही कुछ और वेरिएंट्स कर लेंगे, 19 की कुछ और वेरिएंट, बाकी वेरिएंट्स हम नहीं किए, 18 के वेरिएंट. दैट विल बी अ बेटर आइडिया. वैसे 18 और 19 के और वेरिएंट्स कर लेंगे. लेकिन 16 के बाद we will go to 2020 directly. Yes. Okay. Manahil probability. So this Monday we might not have a class. तो अभी ना हमारी शायद Monday और Tuesday को हमारी classes miss हो. तो I'll be doing more classes then later on. शायद मैं 6 days a week या 7 days a week करनी पड़े as we get closer to the exams. This Monday, Tuesday might not be possible for me. But yes, so I have a few topics in line. एक तो हमें हमारे पास कौन-कौन से रह गए हैं. So we have to do, एक तो हमें ग्राफ्स की प्रैक्टिस करनी है एक सेशन के अंदर. ठीक है, ग्राफ्स और फंक्शंस की प्रैक्टिस पास्ट पेपर क्वेश्चंस करने हैं, वो हमारा एक सेशन रहता है.
हमारे जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, we have to do transformations, we have to do sequences, we have to do probability and statistics. ये 3 major topics तो हमने करने हैं, and we will see if we have some time apart from that. शायद कुछ जो है वो सेट्स पे देख लें या फिर एवरीडे मैथ्स पे, इन दोनों में से एक चीज हम और करेंगे. तो stats and probability, so yeah, let's do that next then. So statistics and probability, we can make that our next session. ठीक है. probability तो काफी आसान है वैसे. हम बेसिकली पहले stats से स्टार्ट करेंगे, तो हमें शायद एक सेशन हमें stats पे लगाना पड़े, because उस probability questions के अंदर you actually need to use statistics a lot of times. उसके बाद फिर आपको probability apply करनी होती है. So we might do statistics first. इसके अंदर आपको कुछ graphs, histogram, cumulative frequency curve वगैरह वो आने चाहिए. फिर how to calculate the mean from a given situation, from a table, mean कैसे निकालना है और उससे related calculation सारी. ठीक है, तो mean, median, ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी है. Transformation भी करना है. Yes, so that's definitely one major topic that we're going to be doing. तो ये दोनों तो हमने कंफर्म करनी है, statistics, probability and transformations. ठीक है. उसके साथ जो है हमें एक दो टॉपिक्स हम और कोशिश करेंगे कि हम वो भी कर लें. तो you can give your input as well, and I'll be looking at my end as well कि और क्या करना चाहिए. Sequences में सोच रहा था एक, और साथ sets, इनमें से कोई हो जाए, या और everyday maths. These are the other 3 options: everyday maths, sequences and sets. ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन तो करना है और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी करना है. उसके अलावा हमारे पास वो 3 टॉपिक्स हैं जिनमें से हम कुछ कर सकते हैं. What do you guys think? ये सब ठीक है, कर लेंगे. मेरा आपसे ये क्वेश्चन था सर, लास्ट के पेपर को छोड़ के और हम कितने पास पेपर करें? जितने मैक्सिमम कर सकते हैं, जितना टाइम आप करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना बेहतर है. लेकिन मेक श्योर कि आपका ज्यादा फोकस है पास्ट पेपर्स करने का. पर्पस एक तो ठीक है, आप पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके साथ एक पर्पस ये भी होता है दैट यू डायग्नोज के किन टॉपिक्स में आपको ज्यादा इशू हो रहा है. आपने 4-5 पेपर्स किए, अब जिन टॉपिक्स में आपको इशू हो रहा है, यू शुड गो बैक एंड उनके टॉपिकल क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करें. तो उनकी फिर आप जो है वो स्पेसिफिक उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस और पास्ट पेपर्स के, कोई टॉपिकल बुक पकड़ लें, रीड एंड राइट की पकड़ लें, एमएस बुक्स की पकड़ लें, कोई क्लासिफाइड है वो जो भी आपके पास है अनसॉल्व्ड टॉपिक, उसमें से फिर उस टॉपिक के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस करें. आप वही टॉपिक हर पेपर में गलत करते जाओ तो उसका तो फायदा नहीं है ना. अगर आपको पता चल रहा है कि एक ट्रेंड आ रहा है, ये टॉपिक मेरे से नहीं हो रहा, उस टॉपिक से ज्यादा फिर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे. ओके. ठीक है. एनीथिंग एल्स? No sir, thank you so much. Manal, you have any question? All right, so let's end it here today then. I'll see you tomorrow inshallah. ठीक है. Allah Hafiz. And we will be starting May-June 2017 tomorrow inshallah. ठीक है.